Dear students, today I am going to discuss with you one of the most important chapter of your class, that is the three orders. And the theme of this chapter is that is feudalism. So in this chapter, the how the society, means the European society, how it was divided into three categories. About that we will discuss in this chapter. Okay, so first one is that the clergy, means the Christian priests, the nobility, the land owning nobles, the peasantry, they were the farmers. So like this, during the period of the French Revolution, how the society was divided into three categories, like this also in this chapter we will discuss. Okay, so next, see, this is the three orders and about the sources, also documents, details of land ownership, records of births, marriages and death kept by the church help to understand the structure of the families and of the population, the inscriptions in churches, songs and stories. There are the different sources, we will discuss about that. Okay. So what is the feudalism? Okay, so already I have told you in this chapter, means that the chapter name is three orders, but the chapter is actually about the feudalism we will discuss. So feudalism means what? So society was divided into three categories. Feudal pyramid of power, means kings, nobles, knights and vassals, then the peasants. So like this, it means one of the pyramid, according to the pyramid wise here is given, means how they were the protector groups, they were the land fiefs and the lands and also the money, and knights means it is the king, means a layer, apex level of the society. So what is feudalism, we will discuss now. फ्यूडलिज्म किसको कहा जाता है? The term is divided from a German word feud, which means a piece of land, and ism related principles to follow. Okay, so feudalism का मतलब क्या है ना, ये एक तो जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है कुछ लैंड, मीन्स पीस ऑफ लैंड, एंड इजम मीन्स रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स टू फॉलो. Feudalism was a process that revolved around the principles of land related matters. Feudalism का मतलब ये है कि लैंड, जमीन, जमींदार, महाजन, ये सारा टॉपिक को लेकर के जो टॉपिक रिलेटेड है, that is known as the feudalism. So all social, political and economic affairs of society were led by the land. Okay, in this chapter we will discuss about the social, political and economic affairs of the society were led by the land. लैंड के माध्यम से कैसा इसको कंट्रोल किया गया था और इम्पोर्टेंस कैसा था लैंडलॉर्ड्स का. सो फीचर्स ऑफ फ्यूडलिज्म, लैंड के ऊपर में, जमींदार के ऊपर में सेकंड ऑर्डर जिसको बुलाता है, बिकॉज क्लेर्जी फर्स्ट ऑर्डर, नोबिलिटी सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इज द पीजेंट्स कैटेगरी, मींस द फार्मर्स. सो सेकंड ऑर्डर का इंपॉर्टेंस क्या था यूरोपियन कंटिनेंट में, कंट्रीज में, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो फीचर्स ऑफ फ्यूडलिज्म, फीचर्स, a kind of agricultural production based on the relationship between the lords and peasants. Peasants work on the lands of the lords in lieu of labor service. देखो, a kind of agricultural production based on the relationship between the lords and the peasants. यहाँ पे ऐसा भी कुछ सिचुएशन था जहाँ पे लॉर्ड्स एंड पीजेंट्स के भीतर में एक रिलेशनशिप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए, इसके साथ साथ पीजेंट्स वर्क ऑन द लैंड्स ऑन द ऑफ द लॉर्ड्स, लॉर्ड्स का लैंड में पीजेंट्स बहुत काम करते थे इन ल्यू ऑफ लेबर सर्विस, ओनली टू गेट द सैलरी एंड ऑल्सो टू गेट द मीन्स their livelihood, maintain their livelihood. So that's why in lieu of labor service, and peasants got military protection from the lords. peasants को क्योंकि ना ये लोग लॉर्ड्स का जमीन में काम करते थे, इसलिए इन लोगों को बहुत कुछ फैसिलिटी भी दिया गया था. So that is the military protection also they got. Then lords decided the judicial matters of the peasants. lords मतलब judicial matters जो था peasants के बारे में, peasants का मामला जो था, इसको भी lords डिसाइड करते थे. lord was all in proprietors of lands, मतलब लेकिन लॉर्ड किसको बुलाता है ना, लैंड लॉर्ड्स, जमींदार, महाजन जिसको बुलाता है. सो ये लोग थे, मीन्स ए रिच पीजेंट्स जिसको बुलाता है. हैप्पी अमाउंट ऑफ द लैंड जिसके पास था, उन लोगों को लैंडलॉर्ड्स बोला जाता था. और दे वेर all in all the proprietors of lands. Then feudalism covers economic, political and social aspects of life. feudalism ही इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ को मतलब कवर किया था. देन फ्यूडल सिस्टम,
feudal system देखो, here is also one of the pyramid, that is the king, then second one is the tenants and chiefs, then third one is the knights मतलब warriors also, then last one is the peasants. Like this 4 category was divided the society during the time. So it is the France map, because already I have told you during the period of the French Revolution how the society was divided into different categories. I have told you in the past when I started. So this is the France map of France. And then the name France, Gaul was a province of Roman Empire with a wide range of geographical features. यहाँ पे हम लोग फ्रांस का एक प्रोविंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब उसी के जगह का टॉपिक के ऊपर में कैसा सोसाइटी था. सो दैट वाज द गॉल. इट वाज ए प्रोविंस ऑफ रोमन एम्पायर विथ ए वाइड रेंज ऑफ geographical features, and a Germanic tribe France conferred their name to Gaul and it later came to be known as France. इसके बाद ये फ्रांक से मतलब फ्रांस हुआ था. देन इंग्लैंड इज नो, क्योंकि ना हम लोग अभी यूरोपियन कॉन्टिनेंट का कुछ यूरोपियन कंट्रीज के बारे में, यूरोप कॉन्टिनेंट का यूरोपियन कुछ कंट्रीज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं. तो फ्रांस, देन इंग्लैंड, लैंड ऑफ एंजल्स बोला जाता था उसको, इंग्लैंड को. व्हाई लैंड ऑफ एंजल्स, व्हाई इट वाज कॉल्ड? The Angles and Saxons came from Central Europe and got settled in England during 6th century. The name of the country, England, is a modification of Angles and Angles. Land as England was inhabited by Angles. And feudalism developed in England from the 11th century. No need to remember this one. Only you have to know that feudalism developed in England from 11th century. Okay. 11th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था. तो यहाँ पे चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर इज दैट द 3 ऑर्डर्स मींस द फर्स्ट ऑर्डर दे हु वर दे एंड व्हाट वर द फंक्शंस, एंड द सेकंड ऑर्डर एंड आल्सो देयर फंक्शंस, थर्ड ऑर्डर देयर फंक्शंस. सो फर्स्ट ऑर्डर, इसमें कौन कौन आते हैं देखो. द फर्स्ट वन इज द क्लेर्जी. द कैथोलिक चर्च हैड इट्स ओन लॉज. चर्च मींस द यूरोपियन प्रीस्ट को क्लेर्जीज बोला जाता था. Catholic Church had its own laws, own lands given to it by rulers and could levy taxes. ये लोग क्या करते थे ना, रूलर्स को मतलब कैथोलिक चर्च इन लोगों का अपना लॉस था, एंड ऑल्सो दे कलेक्टेड द टैक्सेस ऑल्सो. द चर्च वॉज ए वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन था which did not depend on the king. ये completely separate from the king. It was completely handled the whole society also, and also the main head office was also settled in the church. चर्च को यहाँ पे हेड ऑफिस बोल के भी माना जाता था. यहाँ पे एट द हेड ऑफ द वेस्टर्न चर्च वाज द पोप लिव्ड इन रोम. ये वेस्टर्न चर्च का हेड जो थे पोप, जो कि रोम में रहते थे. एंड द क्रिश्चियंस इन यूरोप गाइडेड बाय बिशप्स एंड क्लेरिस हु कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट ऑर्डर. ये क्रिश्चियंस इन यूरोप, ये लोग मतलब जितने सारे क्रिश्चियंस थे यूरोप का, ये लोग बिशप्स के माध्यम से, बिशप्स मीन्स द प्रीस्ट, क्रिश्चियन प्रीस्ट को बिशप बोला जाता है, एंड क्लेरिस ऑल्सो बोला जाता है. एंड हु कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट ऑर्डर, इन लोगों को, ये लोग आते थे, दे वर कमिंग अंडर द फर्स्ट ऑर्डर. देन मोस्ट विलेजेस हैड देयर ओन चर्च. बहुत सारा गांव का अपना ओन चर्च था. वेयर पीपल असेंबल्ड एवरी संडे टू लिसन टू द सर्मन बाय द प्रीस्ट एंड प्रे टुगेदर. Means every villages had their own church, and also many common peoples also assembled every Sunday to listen the sermon. Sermon means स्तुति, इन लोगों का जो प्रवचन जो है, इन लोगों का जो बाणी जो है उसको सुनने के लिए from the priest, and also they assembled to pray together. इसलिए ये लोग assembled होते थे. So they were the clergies and they were the first order. Then what was the tithe? A tax levied by the church on the peasants which was 1/10 of their produce. That is known as the tithe. जो कि मतलब हार्वेस्ट फसल का एक 1/10 पार्ट जो है ना उनको देना पड़ता था एज ए टैक्स. दैट इज नोन एज द टीथे. Then the church and the society. 4th century onwards, Christmas and Easter began to be celebrated. Sunday became holiday. Pilgrimage started. चर्च और सोसाइटी के साथ लिंक क्या है देखो यहाँ पे. 4th century onwards, Christmas and Easter ये दोनों सेलिब्रेट होता था. संडे इन लोगों का हॉलीडे था. पिलग्रिमेज भी स्टार्ट होता था. Peasants welcomed holy days, means that is the holidays, because they were not expected to work then. Then about the monks. Monks is also one of the most important part of the first order, means the clergies. We will discuss in the next video. I will discuss with you
about the monks in the next video. So students, I think you have to remember, means most important thing always I have told to you in my all videos, you have to listen 2-3 times, then you will write in your copies all the points, means after that it will more benefit for you. Okay, thank you all of you.